Electrical hazards. Electrical hazards occur because of three reasons. सबसे पहले electric circuit overloading, then poor electrical maintenance, and if we are using long electrical leads. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरलोडिंग. लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरलोडिंग हो जाती है. हमें चाहिए कि इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के बाद उसको स्विच ऑफ कर दें. इसी तरह पुअर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इफ देयर इज इन द लैब. फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशनर्स are used in all laboratories in order to save the chemicals or any other infectious material even. So in that case, if there is a poor material of the cable, then air conditioners which remain switched on for 24 hours, they can also catch the fire. Then long electrical leads, for example, if we are using extension for one microscope, then we are using the same extension for the second microscope, and we are also putting heavy equipment on the same extension, then again there are chances of electrical hazards. Now, in order to treat with all these three types of electrical hazards, it is the duty of the lab supervisor to check the electrical appliances as well as the equipments daily. They must be tested and they must be inspected on routine basis. अगर आप लैब के लिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपने इक्विपमेंट्स बाय किए हैं, इट इज़ बेटर टू यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद ईच इक्विपमेंट. ये वर्कर की अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरलोडिंग से बचाएगा. सो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोटेक्ट वायरिंग फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड विद द इलेक्ट्रिक करंट्स. इसके अलावा अर्थ फॉल इंटरप्टर्स शुड बी यूज्ड. That is not for the protection of the equipment, but it is for the protection of the worker from the electric shock. So it is very important to design the lab buildings by these two things. Electric circuits should be used for the equipment and earth fall interrupters must be used for the workers, as they protect the worker as well as the equipments from the electrical hazards. Now, whenever we talk about the electrical hazards, we have to follow the National Electrical Safety Codes and the standards. For example, the most important code is that to protect the worker as well, there must be earth grounding system. Therefore, that we have to use 3-pronged plugs.